Good afternoon, student. So we are discussing about periodic classification of elements. So we have seen Dauber traits, Newton octave, then Mendeleev periodic table. So now we will discuss about the modern periodic table. The above all the things the person has discovered according to atomic mass number. But here the Mendeleev modern periodic table has been discovered by Moseley. He did according to the atomic number. When he did according to the atomic number, whatever the drawback was there, correctness was, we can say doubtful was there, the all thing has been corrected in the modern periodic tables. Modern periodic table has been discovered in 1913 AD. Henry Moseley, he discovered the modern periodic table according to my atomic number, according to atomic mass number. So here according to number, that atomic number is what? Z. So here in 1913 with the help of experiment done using X-ray tube, he did according to X-ray tube, बोलते ना X-ray tube के हिसाब से उसने एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक मास नंबर का. एटॉमिक मास नंबर डिनोटेड बाय Z. तो he did the positive charge on the nucleus or the nucleus of the proton or the number of the proton. तो जो बोलते ना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का था और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ द एटम इन द एलिमेंट. तो एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आता है और नंबर ऑफ न्यूक्लियस था, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस था, तो विद द हेल्प ऑफ डिड ही फाइंड द एटॉमिक नंबर. उसने एटॉमिक नंबर बताया और एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही मेड इट. तो अकॉर्डिंग टू दिस few of the stated are there. Property of element are periodic function of their atomic numbers. He told whatever the properties are there, so that property is related to atomic number, not by atomic mass number, not by atomic numbers. जो डॉबर एंड ट्रेड था, न्यूटन ऑक्टेव था, मेंडेलीव था, उन लोग ने एटॉमिक वेट के हिसाब से किए थे, मास नंबर के हिसाब से किए थे. बट हियर अकॉर्डिंग टू दी नंबर्स, उसने एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी बताई सारे एलिमेंट्स की. एंड ही फाउंड द करेक्टनेस ऑफ ऑल द थिंग्स. So we will discuss about the modern periodic table. Modern periodic table we are telling as a long form of the periodic table also. Modern periodic tables we are telling as a long form of the periodic tables. He made the element in the increasing order of the atomic numbers. जितने भी उसने एलिमेंट थे ना सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक नंबर्स के. एंड द प्रॉपर्टी ही डिड. तो जब उसने एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से पुट किया ना, तो जो भी करेक्टनेस था सारी के सारे ड्रॉबैक्स सब ठीक हो गए इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो वी आर टेलिंग एज एन लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स. वी विल सी इन द 2.7 दे गिवन सी टेबल 2.7 according to Henry Moseley. And whatever the drawbacks of the Mendeleev periodic table also has been corrected. And whatever the drawbacks was there of the Mendeleev, all has been corrected in the modern periodic tables. But the main thing of the हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का जो डाउटफुलनेस था वो करेक्ट नहीं हुआ अभी तक, रिमूव नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ ही है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल्सो. तो विल सी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ द एटम, the way in the which the electron are distributed, how the electron has been distributed in the number of cell. Number of cell means K element cell. You will see in the total number of electrons. So he did the nucleus. So whatever the we can say electrons are distributed in the cell around the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन थे ना किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट थे, न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट थे और इसमें, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. The total number of electron is same in the atomic number. Whatever the atomic number and electron number are same as it is. और जो रिलेशन था एटॉमिक नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, this full we will see in the modern periodic table. You will come to know in the modern periodic tables. Now use your brain. They given. If you will see how property of the element in the modern periodic tables. So how is the problem regarding the position of cobalt and nickel in Mendeleev periodic table resolved in modern periodic table? If you will see the cobalt and nickel, the atomic number are like an ascending order. जो एटॉमिक नंबर था कोबाल्ट और निकल के हिसाब से उन लोग आगे पीछे हो गए, तो करेक्ट हो गया. हाउ डिड द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स? दे आर टेलिंग क्लोरीन 35 and 37, 17 and 17. यहाँ पे आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी. तो इसमें बता रहा है ये. तो आर फिक्स इन द मॉडर्न पीरियड, आइसोटोप भी फिक्स होगा इसमें. कैन देयर बी एनी एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 53 or 54?
जो क्रोमियम और मैग्नीज था, तो 53 और 54 कोई और एलिमेंट थे जो इसमें फिक्स हो गए. व्हाट डू यू थिंक, शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द ग्रुप 17 ऑफ हेलोजेंस इंस्टेड ऑफ ग्रुप 1? इज इट पॉसिबल? हो सकता है ये ग्रुप हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हम लोग ग्रुप 17 में हेलोजन के ग्रुप में रख सकते हैं in the modern periodic table. But in the modern periodic table also you will observe the hydrogen is the first group. So you will see the structure of the modern periodic table. First in a horizontal, there are 7 horizontal rows in the modern periodic tables. There we have seen in Mendeleev there are 8 or 9 rows was there. So in this modern periodic table has a 7 horizontal rows we are telling as in a period, that is 1 to 7, and 18 vertical columns are there in this. Not like that way above. We have seen in the Mendeleev group 1, group 2, group 1 plus, R1 plus, R2 plus. It is not like this way. Here 18 groups are there. That we are telling as in a 18 vertical columns. They are telling this. They are telling as in a the 18 vertical column in the periods are calling as in a group. जो horizontal row वाला था वो period था और इसको क्या बताया इसने? Group बताया इसमें. The arrangement of the period and the groups are in the form in the boxes. You will see the arrangement in the modern periodic table. पीछे ये 2.7 वाला टेबल देखेंगे ना, पेज नंबर 23 पे उसने बताया. देखो there are 7 horizontal rows are there. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीसियम और फ्रेशियम. ये 7 horizontal rows हैं और 18 vertical column. You will see 1, 2, 3 like this way. 18 till हीलियम तक दिया उसने. Here. So now there are all this they are forming in the boxes. Apart from 7 rows, पूरे 7 rows थे इसमें, टॉप से लेके बॉटम तक में. The 2 rows are shown in the periodic table. जो 2 rows एकदम मिडल में बताए, डाउन में बताए. That is lanthanide group and actinide group. That is a man-made materials, elements. तो बोलते हैं दो बोलते हैं ना, the 2 rows separate rows they shown. That is lanthanide and the actinides. They shown in the periodic table on the downward separately they shown. There are 118 elements till now it has been discovered. They all shown in the modern periodic tables. Now the full periodic table has been divided into 4 blocks: S, P, D, F block, S block, P block, F block and D block. If you will see carefully, S block has the 2 group, 1 and 2. S block has a 1 and 2 group are there. You just look it here. Hydrogen, the barium that they are telling as how they indicating as an S block. The P block is from 13 to 17. D block they shown as 3 to 12, and the last F block, that is lanthanide and actinide, in the downward positions. They shown this thing. They told the group 1 as an S block 1 to 2, group 13 to 18 that is P block, 3 to 12 that is D block, and F block is lanthanide and actinide group. There are the 3 traditional type of the elements are there. There are 3 traditional type of the element you will see. That is a zigzag lining. We have seen metal, non-metal, but in the modern periodic table they shown as a metalloid category also. You will just look as a zigzag lining are there. This zigzag lining is in a category of the metalloids. जो zigzag lining देख रहे हैं ना वो metalloid की lining है, जो border lining है. All metal, जितने भी metal है सब लेफ्ट पोजीशन में आ रहे हैं. हाँ, वॉट एवर द पोजीशन, हाँ, द मेटल पोजीशन इज कमिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड नॉन मेटल पोजीशन इज कमिंग ऑन द राइट साइड ऑफ दैट zigzag lining. Now modern periodic table we will see within a period neighboring element, जो बोलते हैं ना बाजू के एलिमेंट्स रहते हैं. There are different elements are there in the property. All the elements having the property it will be a different. If you will see S block, if you will see S block, P block, D block, F block, they have the same similar chemical property. You can say the property are same, but it is in a different manners. Element in the same group, whatever the same group element, they have the property are same. And periods, the element in the same group, whatever the characteristic are there, जो characteristic groups और periods की है उसके electronic configuration के हिसाब से बताया. And from that electronic configuration it is dividing how much we can see in which category of the groups are there and periods are there, they are placing it. According to electronic configuration we can easily find it in which block and in which group they are coming in category. Now characteristics of the groups and tables are, periods are there. Characteristics of the groups and periods we will see in the periodic table. The comparison you will observe, they are different little bit.
but whenever the group are increasing, the atomic number is also increasing. जिससे से ग्रुप बढ़ रहा है तो उसकी बोलते हैं ना, उसकी एटॉमिक नंबर की कैपेसिटी बोलते हैं ना, वो भी इंक्रीज हो जा रहा है, बट सिमिलरिटी बता रहा है उसमें. हाँ, वेरिएशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप शोन सिमिलरिटी. बोलते ना जो उसकी सिमिलरिटी, जो ग्रुप की बोलते ना जो एलिमेंट है उन लोग की सिमिलरिटी थी, और ग्रेजुएशन मतलब चेंज बढ़ते जा रहे थे. हाउएवर द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली. जो एलिमेंट थे प्रॉपर्टी की वो स्लोली चेंज हो रहे थे, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहे थे, कॉलम बढ़ रहे थे उसमें. while going from one end to the other end, means from 1 to 18, you will observe the property and characteristic has all been changing from left to the right. Now just see groups and electronic configuration here in this category. Go through the modern periodic table 2.7 and write the name of the other element of the group 1. Group 1 you will just see hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium you will see. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का होता है. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 4 एलिमेंट इन द ग्रुप. वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल डिस्कस ऑन पेज नंबर 23. हाउ यू कैन राइट इन KLMN group. Then you will come to know how you can write easily. Which similarity do you find in the electronic configurations? If you will see S block, that is one. In electronic, according to electronic configuration, you will observe all in the last block cell has an 1 1 will be same. According to 2, all electronic configuration in the last cell 2 2 will be same. Like this way, the similarity you will come to know in an electronic configuration. How many valence electron are valence electron in each of this element? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि 281 है, 287 है, 285 है. तो जो लास्ट वाला बचता है ना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे कि 2, 8 और 3, तो 3 वैलेंस सेल हुए. 2, 8, 5, बट 5 में 8 करने का रहता तो 3 वैलेंस सेल रहते. 2, 8, 1, तो 1 विल बी द वैलेंस सेल. लाइक दिस वे. So you just observe, you will find the group 1. As I told you, group 1, how you can write hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, this all. तो group 1 is the alkali metal. हाँ, group 1 मेरा क्या होता है, अल्कली मेटल है. अल्कली मेटल वो चीज़ें रहती है जो शाइनिंग टाइप देती है, ज़्यादा चमकने वाली चीज़ें रहती है. एंड ग्रुप 2 दैट इज इन टेलिंग एज एन अल्कली अर्थ मेटल. हाँ, ग्रुप 2 जो है ना, मैं बैरियम, मैग्नीशियम, सीसियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरियम, रुबिडियम, रेडियम, ये सब मेरे अल्कली अर्थ मेटल है. तो अल्कली अर्थ मेटल लाइक है ना सॉइल टाइप. देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. इफ़ यू विल सी द फर्स्ट ग्रुप, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें लास्ट में क्या रहेगा, ग्रुप 1 में इसका वैलेंस सेल लास्ट का 1 1 ही रहेगा. अगर 2 देखेंगे तो इसका लास्ट का वैलेंस सेल 2 2 रहेगा. इन द आउटर मोस्ट सेल देयर आर इलेक्ट्रॉन, outermost cell of the chlorine. And now if you will see the halogen group, that is 17. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, adenine, टिशियम, ये सब देखेंगे. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहेगा, लास्ट में 7 7 रहने वाला आउटर मोस्ट सेल में. वी एडेड वन टाइम. हाँ, द फॉर्म मेकिंग फ्रॉम वाइल टॉप टू द बॉटम यू विल ऑब्जर्व एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉनिक सेल विल एडेड. है ना, हर बार इलेक्ट्रॉनिक सेल ऐड होते जाएगा इसमें. ओके, एंड द नंबर ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग इन दिस कैटेगरी. Now uranium, you know that is an atomic number 92, but uranium 93 to 18, 118. Just look, 93 से लेके 118 तक उसमें दिया है. You will see there, here 93 to 118, 89 to 103 you will observe. उसने 89 से लेके 103 तक बताया है. देखो डाउन में बताया है उसने 89 to 102, 89 something, 90, 91, 92, 93, all this 118, whatever this all electronic configuration are the unstable one. ये सब unstable है, radioactive वाले हैं सब. and where it has a short life, बोलते हैं unstable बता रहा है, एकदम short life है, मतलब easily out हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं. In the modern periodic table you will see the element are arranged in the increasing orders. जो element है मेरे increasing order में arrange होते हैं. यहाँ वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोलते हैं, तो 18 ग्रुप्स है. देयर आर 18 ग्रुप्स. देयर 18 ग्रुप्स. द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ग्रुप आर सेम. हाँ, हर ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है. जैसे कि केमिकल ग्रुप 2 लेता हूँ, ये ऑल द ग्रुप 2 केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम. ग्रुप 3 आई विल टेक स्कैंडियम, येटेरियम, देयर ऑल केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम. इफ आई विल टेक द 29 ग्रुप, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दिस ऑल केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम इन ऑल कैटेगरी. एंड देयर
graduation means it will increasing. Horizontal rows we are telling as in a periods. There are 7 periods. The period of element change slowly. जो पीरियड से स्लोली चेंज होते हैं एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, फिर फ्रॉम 1 to 7. तो here you will observe, just see periodic table, modern periodic table. If you will see, there are S block. In S block 1-2 group are there. In D block we have seen 3 to 12. P block that is 13 to 17, and the last one lanthanide, F block. F block is a man-made element, that is lanthanide and actinide category. ये सारे man-made element है. Now period and electronic configuration. How you can write period and electronic configurations? Now lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then sodium, neon. This is the period 2. ये period 2 देखो उसमें, ये period 2 बताया देखो उसमें. ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, neon. This is all the electronic. You have to write the electronic configuration. As example, how you can write the electronic configuration? As example 3. Electronic configuration. For writing electronic configuration, you should know 2n square. They given like this way. Look here. Cell KLMN. In the K cell, first electronic configuration 2 will be there. In L cell, the electronic configuration is 8. M cell, that is electronic configuration is 18, and N cell, that is 32. Now N means 1, that is 2 into 1 square 2. L you will see 2 into 2 square is 8. 3, 2 into 3 square 9, and 4 square is 16, that is 32. This is the electronic configuration. How we have to fill it? First, every time we have to write the 2. Every time you will write the first cell, always accumulate last to last 2 numbers, 2 atomic numbers. As example, in the case of hydrogen, only first circle will come. Just see, in the hydrogen how they written, H is 1. Now in the case of the lithium, lithium is what, 3. So how they written, first 2 will come. In the second cell it is coming 8. तो कितना है मेरा 3 के लिए कितना बचता, 1, तो 1 आ जा रहा है इजीली. अब बेरिलियम में 4 होते हैं, बेरिलियम में 4 होते हैं, तो फर्स्ट सेल तो अपना क्या लेता है, 2 ही लेगा. सेकेंड में मेरा 8 आता है, बट इजीली मेरा 2 तो फिट होने वाला है. बोरॉन दैट इज़ 5, फर्स्ट 2 विल कम एंड देन दी 5 मीन्स 5 minus 2 it is 3, तो सेकेंड सेल विल टेक एज एन 3. नियॉन is 10, तो फर्स्ट सेल विल टेक a 2, सेकेंड विल टेक एज एन 8. Like this way 2 and 8, 10 is completed. But in the case of the third group means there are 3 cell will come. As example sodium, first cell always will take a 2, second will take 8, and the third is taking an 18. तीसरा वाला 18 लेता है. We will discuss this thing on the last line next lectures. And write the notes of the first chapter.